एम सो स्केयर्ड ऑफ द एग्ज़ाम्स मैन। मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहा है, ऊपर से द सिलेबस बार बार चेंज होते रहता है, बार बार देयर आर चेंजेस इन दी एनसीईआरटी। कभी क्वेश्चंस पुराने सिलेबस में से आते हैं जिनको लोग बोलते हैं कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड कभी कभी न्यू सिलेबस में से आते हैं। सो इट गेट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड सो स्ट्रेसफुल. You know, I'm so scared. Like last time there was a paper leak and the stress, it got me so much, dude. And there was like no even action taken from the NTA. What if like इस बार कुछ हो जाए? I'm already exhausted giving NEET previously, and the marks, the inflation in the marks, the inflation in the amount of students that are sitting, I just don't know. You know, this is your fucking problem. हाँ, तुम लोग को तो रोज का ही चालू रहता है, मैं आज पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा. Mock tests, they don't scare you. The scale should, okay? While you are busy scrolling, thousands of city coordinators are already on the ground doing their work. Thousands of exam functionaries are already doing their work. This is not you versus the paper. This is you versus the system. Sir, but aren't you the part of that particular system? चुप चुप, ज़्यादा नहीं बोलने का, ठीक है ना? हमेशा तुम लोग तुम्हारे मॉक टेस्ट का एक्सक्यूज देते रहते हो. The system is officially leveling up. You understand that? There's gonna be 0 errors. But sir, आपने वो लास्ट टाइम फ्रॉक को इंसेक्ट बोला था. ज़्यादा मत बोलो, ओके? उसके लिए भी लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लीमेंट्री टीबी रखा था कि नहीं रखा था, या भूल गए? You know what? The NTA is literally deploying mechanism using and including the latest AIs. The examination is gonna be an airtight environment. There's gonna be no loopholes, no distraction, just you and your question paper. What's up, people? Oh my god, the NEET 2026 news of it being cancelled after the exam is like already done. Man, must be a heartbreaker for the people that have given NEET this year. मैं तो भाई क्या पता मुझ में कौन सी बुद्धि आ गई, मैंने पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ही मैंने बोल दिया ये तो मेरे से नहीं होने वाला, ये मेरा दिमाग डिप्रेशन में ही लाएगा. आई एम क्विटिंग दिस शिट. I for myself cannot be more grateful because ये सब होते होते मेरा पहला जो मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट आ गया, उसका काउंसलिंग हो गया, मेरा एडमिशन प्रोसेस भी ऑन गोइंग है. एंड यू गाइज, the one that gave NEET this time, it was for nothing, dude. The stress, the panic, the money, the travel, it was all for nothing. Feel so bad for you guys. And the way NTA played so smart. Latest AI mechanism, what the fuck? And the exam functionaries are already on the ground. What? क्या ग्राउंड पे तुम्हारे तो सारा लाइक वो ट्वीट्स ही अभी गिरने वाला है. आई डोंट नो हाउ वी आर लाइक नॉट एंग्री इनफ एज स्टूडेंट्स. वी आर द ब्राइट फ्यूचर. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज, दैट वी आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया. भाई साहब, आई डोंट रियली थिंक दैट देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया व्हेन द एग्जाम बॉडीज आर सो मच इन द डार्क. मैंने तो लाइक नीट क्विट कर दिया. सो लाइक दिस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सेल्फ. इफ़ आई वॉज हियर, लाइक ये पोजिशन में मैं रहती कि मैंने कुछ भी करके कैसे भी करके एग्ज़ाम दिया होता ये वाला, एंड ये मेरा 3rd अटैम्प्ट रहता, 4th 5th ड्रॉप रहता, एंड मैंने एग्ज़ाम दिया होता, और मुझे अगर ऐसा पता चला होता कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया ऑफिशियली एंड रीनीट होगा, मुझे जो गोली लगती मेरे दिल पे, मेरे दिमाग में, वो आई वुडंट बी एबल टू हैंडल टू पिक अप द पेन अगेन and open that book again. It would literally make me not breathe. Right now, whoever is there, you know, जिसको अभी भी नीट करना है भाई, good luck to you. You are very strong if you are going back at it again. The people who are like not really ready for this time's NEET, take this as your sweet time और जान लगा दो थोड़ा revision में. And the one that were already burnt out from NEET,
like me, decide something, decide some alternative, or really make sure that you really want to go for this. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से अभी बहुत सारे बैचेस आएंगे, बहुत सारे कोचिंग्स के, यू नो, and they will try to make money off of it. They will try to get you through emotions. Okay, this happens a lot in our India. People are ran through by emotions. Okay, अभी बहुत सारे कोचिंग्स आएंगे, 2-3 इमोशनल बातें करेंगे दैट बच्चा वी अंडरस्टैंड यू, बच्चा वी केयर फॉर यू, इसलिए हमने ये बैच निकाला. ब्रो, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट यू. It's your fruitful years that are gonna pass by, and it's your mental health at the end of the day, you know. So अभी बहुत सारे बैचेस निकलेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स लोगों के वीडियो निकलेंगे. आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनी वन हियर, बट दिस इज़ गोना हैपन अ लॉट in the market. These teachers and these coaching classes, they are gonna make a lot of money off of your emotions. So it's very important, आप आपका टाइम लो, आप आपके सारे इमोशंस कलेक्ट करो, सिट विथ इट एंड रियली कीप योर इमोशंस असाइड. और बहुत लॉजिकली सोचना कि इफ़ यू रियली वांना गो फर्दर विद दिस, एंड इफ़ यू आर रिच, ब्रो, go abroad. Just go abroad. Don't even try private here in India. Just go abroad, settle abroad, and do your medicine in abroad if you are rich. Or take that advantage. And क्या ही बोलूँ मैं. I just cannot imagine what must be people who gave NEET somehow, कैसे कैसे हालत में, you know, उनके ऊपर क्या ही गुजर रही होगी. And what NTA was tweeting was so ideal कि उनको तो लगता है कि whoever is like not passing the exam or whoever is not meeting the score, वो बस scroll ही करते रहता है. There are like so many back stories happening in the background, and then they come up with this shit. And it's so easy for them to just throw a re-NEET wala thing, you know, on students' faces. It's very easy for them. This is literally a loophole. It's literally a loophole. And if you have a solid plan to do something else, a plan B, to get out of this loophole, just get out of this loophole. I cannot be more grateful to myself to get out of this loophole. And it's very good to be self-aware and to accept, you know, ये मेरी बस की बात नहीं है. May it be due to my intelligence, my environment, or the government that we have and the functioning body that we have. Be it be anything, being aware that it is not for you and this is not how you'll be able to make it, it's very better. I would also like to mention here, मुझे ये पहले पता नहीं था, नहीं तो मैंने इतने मेरे ड्रॉप ईयर्स नहीं लिए होते. यूरोप साइड में कैसे होता है, और लाइक मोस्ट ऑफ द स्टडी अब्रॉड में मेडिसिन कैसे होता है, यू नीड टू बी एन अंडर ग्रेजुएट, सो यू कैन लिटरली डू योर BSc एंड देन लाइक go abroad and then pursue medicine there. So do some research on it via ChatGPT or like via Google, watch some YouTube videos and try to get out of this loophole. This is so depressing. I was talking with my mom and I was telling mom ये सब हुआ. She was too stunned. That woman was too stunned to speak. So she was like thinking कि क्या चल रहा है आज के दुनिया में, education wasn't this complicated back then, she was telling me. And then I like asked her like, are you happy now that I like, you know, मैंने exam quit कर दिया. And she was like, I'm very happy. So sit with your parents. कितने के तो parents भी हो गए that are stressed right now. Sit with your parents, talk to your parents if you want to pursue something else that you genuinely love or you think it has some scope in the future. As I said, यहाँ पे तुम BSc करके like थोड़ा सा you know funds create करके you can apply to abroad medicine के लिए, वो भी try करो. And please do not come under stress and take some wrong step, you know, because this thing, it was out of you guys control, बहुत control के बाहर था.
and it's very sad for those who, you know, attempted the exam under so much stress. और उनके कैसे तो भी 600+ मार्क्स आया. आई वॉज रीडिंग सम कॉमेंट्स ऑन फ्यू यूट्यूब वीडियोज़. वो लोग बोल रहे थे कि लाइक कैसे कैसे मैंने, मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था, मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, और कैसे कैसे मैंने 600+ मार्क्स लाए एंड ये हो गया है. सो वो टाइम में तो क्या ही हालत रही होगी भाई. लाइक मैंने तो क्विट कर दिया, फिर भी मुझको लाइक इतना गंदा लग रहा है. उनके ऊपर क्या ही बीत रही होगी. आई कैन नॉट पुट इनटू वर्ड्स. So I just wanted to make this video and let you guys know that there's a lot ahead. Like, look at me. That was something I was talking so passionately about on Quora. If you just go and see my Quora wale post, you know, I was like arguing with people, but this is my passion, but this is that, and I'm no longer following it, but I'm very content with life. Yeah, क्या होगा ये कंट्री का क्या ही पता. See, medicine is like tough everywhere, even in abroad. It's not easy. It's a difficult degree in itself. But the way that the body is conducting this, they just take it as some joke and then they host a tea party. What the hell? I wouldn't be surprised if they put up a coffee party right now to remind us about all the all-nighters that we pulled. So take this as a golden opportunity for the people, you know, who really wanted to quit this exam. Talk to your parents. Take this as a golden opportunity. उनसे बात करो and get out of this shitty loophole. And never blame yourself for this, because it wasn't your problem. It's just how the education is going on in India. There is a lot to talk about actually, about my life and the updates that I have, but अभी सब in process है. And I don't want to jinx anything, you know, so therefore I'm not really uploading videos. एक बार मेरा कॉलेज का बहुत अच्छे से पक्का हो जाए, I will definitely upload a lot of videos. मैंने तो शूट भी करके रखा है बहुत सब. So जैसे ही मेरा कॉलेज का एकदम से पक्का हो जाए, I will upload many videos. Stay updated. And yeah, that's it for this video. Just take care, everyone who gave need. That's all I'm filming this video for. It wasn't your fault.